Good morning, everyone. I welcome you all to this meet on Let's Talk. You might be knowing 8th February 2022 is celebrated as Safer Internet Day, and the theme for the year 2022 is All Fun and Games, Exploring Respect and Relationships Online. Understanding the importance of keeping this internet space safe for all and awareness about the threats in the internet world needs to be discussed. So we have taken an initiative. Let's talk about safer internet usage. Today, we have in our midst two young and dynamic experts to guide and help us through this talk. So let me briefly introduce our chief speakers for the day. We have with us Mr. Akshay Pandey, who is a global certified information security ethical hacker, who is also associated with the Maharashtra Police to investigate cyber crimes. He is also the co-founder of Encoders Pro and a network security expert and a researcher. He is a senior member of an NGO, Indian Cyber Troops, and also a financial literacy influencer and has trained more than 1,000 students. Our next expert on the panel is Mr. Rahul Singla, with whom we are already familiar as he is an ex-student of our school and have earlier conducted awareness programs for our students, parents, and teachers as well. So along with his job, he is working for a social cause to save children from abuses. He is the founder of the NGO Bachpan, Save the Innocents, and has built his team working to educate the children and different stakeholders through various sensitization programs. Till now, they have sensitized more than 7,800 individuals through various workshops. He is also actively involved in educating underprivileged children, youths, and adults through diverse domains, associated with different support groups connecting with the survivors of child sexual abuse. On behalf of the school management, I welcome you both to this meet. We have with us our Vice Principal, Sister Tessin, Sister Vandana, our Coordinator, Ms. Vissy Thomas, Mr. Victor, along with our students. Now let's begin our talk. I would request Vissy ma'am to start with her question. Good morning, everyone. To begin with this session, my question to Akshay sir is, like we say, safer internet day. What exactly do you mean by safer, and is there a need to be safer? Because once this online session of learning has begun, we have seen children spending more hours on the internet with mobile phones, and online is all the time, there with the students. So being online is the latest new. So my question is, I mean, firstly, why do we need a safer internet day to be celebrated and to raise awareness? And what are the various cyber threats or crimes that are being reported between children 10 to 18 years? And how exactly do we keep them safe? So, am I audible? Yeah. So, very good morning to all sisters and respected members, as well as all the students also. It is a really great pleasure for me as well to come in front of you and to be a part of Safer Internet Day. So, definitely there is a very great need of this awareness session, because आज के session के अंदर में जो हम बात करने वाले हैं, because after the COVID pandemic, we have seen a drastic change in our life as well as in our virtual life also, because you have seen that कि हमारे पास में इतने सारे केसेस बढ़ गए हैं साइबर क्राइम के अंदर में. यहाँ पर आपको मल्टीपल, बिकॉज टीनेजर्स आर वेरी drastically exposed to I can say to the internet world, because जितना वो लोग इससे exposed हैं, जितना वो लोग इन चीजों में माहिर हैं, I don't think कि कोई एक normal 35 above age के person को भी इतनी कोई knowledge रहेगी, because they are keen to explore things on internet.
Yes, there are many things to make sure that you should be aware. Every side, everything has two sides, even a coin has two sides. तो जैसे कि हर चीज की दो पहलू रहते हैं, जस्ट लाइक वन इज गुड साइड, वन इज अ बैड साइड। तो यहाँ पर इस चीज के अंदर में, तो यहाँ पर आपको कई सारे अटैक्स, कई सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। rather it can be a cyber bullying, it can be a grooming, and I can say बहुत सारे ऐसे अटैक्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं जैसे क्राइम्स है जो कि यहाँ पर होते हैं। बट यस, ड्यू टू सम इनोसेंस एंड अनअवेयरनेस, यहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इन चीजों के एक्सपोज में आ जाते हैं। सो आई होप कि यहाँ पर आपने जो एज ग्रुप बोला है 10 to 18, विच इज द मोस्ट वल्नरेबल एज ग्रुप इन टर्म्स ऑफ वी कैन से, जहां पर ये सब जो अटैक क्राइम्स होते हैं ये सब इनके ऊपर में किया जाता है। क्यों? बिकॉज ऑन द इंटरनेट वर्ल्ड, वहां पर एनोनिमिटी आपको लगती है कि कि आप अपना जो भी कुछ डिटेल है छुपा रहे हैं, या फिर आप वहां पर जो भी कुछ अपनी डिटेल्स है वहां पर आप एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। बट यस, वन थिंग यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड, दैट इज प्राइवेसी इज अ मिथ। आप सोचते हो कि भाई मेरे पास में प्राइवेसी है, ये सिर्फ एक माइथोलॉजी है, जो कि आपको लगता है कि आई एम सिक्योर, बट नहीं। बिकॉज यहाँ पर कई ऐसे अटैक्स है जिसके थ्रू जो टीनेजर्स है, जिनको बहुत बुरी चीजें भी फेस करनी पड़ सकती है। तो इसी के लिए दैट्स व्हाई आई सेड कि यस, वी आर रियली फॉर्चुनेट कि आपके जैसे एक बहुत अच्छे रेप्यूटेड स्कूल ने एक इंटरनेट सेफ्टी डे के ऊपर में ये ऑर्गेनाइज किया। सो साइबर बुलिंग होता क्या है एक्चुअली, इसके ऊपर में हम थोड़ी सी बात करेंगे। साइबर बुलिंग इज नथिंग बट जो बुलिंग हम नॉर्मल फिजिकल वर्ल्ड के अंदर में देखते हैं, दैट इज टू बी डन ऑन वर्चुअल लाइफ, जो कि हम इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर वहां पर हम देखते हैं। ग्रूमिंग, ग्रूमिंग के अंदर में कुछ भी एक्सप्लिसिट कंटेंट्स आपको दिखा दिया जाता है, या फिर आपको ऑनलाइन गेमिंग के अंदर में, देखिए वन थिंग, आपके टीचर्स, यू आर रियली फॉर्चुनेट टू हैव दिस काइंड ऑफ एन टीचर्स एंड अ सीनियर लाइक राहुल भैया। व्हाई? बिकॉज ये लोग आपके करियर के बारे में भी सोचते हैं और हर एक चीज के बारे में सोचते हैं कि जो आप अपने लाइफ में एक्सेल कर पाए। बट यस, क्यों? क्योंकि यू आर लाइक दैट क्ले विच इज हैज टू बी मोल्डेड। अगर वो एक बार अच्छे से उन्होंने आपको जो सांचे में ढाल दिया, वो आप लाइफ में कंटिन्यू, लाइफ में हर बार लाइफ लॉन्ग लेके चलोगे। सो ये जो एज ग्रुप है 16 to 18, 16 to 22, यहाँ पर जो चीज के अंदर में आपने एक्सेल कर लिया, डेफिनेटली आप आगे जाकर सक्सेस होने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी पर्सन, नॉर्मली फ्री फायर नाम के गेम्स है, आई होप कि यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़े हैं। अगर कमेंट कर पाए तो फ्री फायर, पबजी, ये सब आप जानते हैं, एक्सपोज हुए हैं ये गेम से, तो प्लीज मुझे यहाँ पर बताइए। तो ये गौरीश, आप सब कुछ गेम्स कहना के, चाहेंगे? गौरीश, वुड यू लाइक टू से यस समथिंग? सर कुछ जाने पहचाने नाम ले रहे Yes, हैं। ma'am. हमारे साथ Yes, गौरीश ma'am. और मेहल जुड़ी हुई हैं। मेहल, आप कुछ कहना ग्रेट। चाहेंगी? Ma'am, like Free Fire and BGM, ma'am, like we spend a lot of time on that. But I personally think, ma'am, like I also enjoy that games. And the problem is, like most of my time I spend online. So, ma'am, I need to have that offline sports, etc., like football, etc. But when I call my friends, they are like saying that we need to play BGMI together. We won't play football. And then they are getting all that fat and unhealthy type. Yes, ma'am. रियली ग्रेट टू सी दैट कि ऑब्वियसली ये जो गेम्स हैं, डेफिनेटली हर एक टीनेजर इसके थ्रू गया है, इसको एक्सपोज हुआ है। बट यस, एक चीज जो हमारे माइंड में ये सब गेम्स के थ्रू बैठी है, दैट इज वायलेंस, टोटली वायलेंस। यू हैव टू किल समवन, you have to get whatever the things which they have, you will get points. But thing is not up to this, वहां पर expenses भी आपको देने पड़ते हैं, you have to buy the uses also, you have to buy the credits also. But ये जो एज के अंदर में कोई अर्निंग तो करता नहीं है, बट कंपटीशन इनकी किससे रहती है? अपने ही स्टूडेंट्स के साथ में, कि भाई उसके पास में एक अच्छी गन की स्किन है, मेरे पास में भी रहनी चाहिए। यस, यू हैव टू, आपको वैसे तो कंपटीशन खुद से ही करनी चाहिए, इन अदर थिंग्स आल्सो, वहां पर भी आपने कंपटीशन करनी चाहिए। बट यस, कुछ लोग यहाँ कर लेते हैं, जो कि एक गलत डायरेक्शन के अंदर में आपको लेके जाता है। ठीक है,
वहां पर आपको और भी कुछ ऐसे अटैक्स के थ्रू एक्सपोज होते हैं, जस्ट लाइक लॉलीपॉपिंग, कि कोई स्कैमर आपके साथ में आएगा, आपको बोलेगा यस, आपको सिर्फ अपना इंस्टाग्राम लॉगिन आपने जो किया है वो सिर्फ एक नॉर्मल पेज के थ्रू लॉगिन कर लो, यू विल गेट द स्किन फॉर फ्री। होता क्या है, इंसान वहां पर लालच में आकर वो सब क्रेडेंशियल्स दे देता है जो कि उसने नहीं देने चाहिए। क्यों? अवेयरनेस के लिए। अवेयरनेस नहीं था हमको ये चीज कैसे होती, इसी के लिए। तो यहाँ पर वो सब चीज होने के बाद में आपकी रेपुटेशन भी वहां पर जाती है। अगर वहां पर कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो जाता है तो भी आपको बहुत बड़ा वहां पर प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये बहुत सारे अटैक्स एंड फ्रॉड्स हैं, जिसके अंदर में मैंने तो कुछ ही चीज बताई है। वी आर हैविंग राहुल भैया एज वेल, जो कि इसके ऊपर में थोड़ा सा एड ऑन भी करेंगे। तो मैं एक केस के साथ में आपको यहाँ पर बता दूंगा। मेरे पास में न्यूमरस ऑफ केसेस है वैसे तो, बट एक केस मैं आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश का ही एक केस है, जिसमें 1200 रुपए की स्किन के लिए, आई होप यहाँ पर कुछ समझ नहीं पा रहे होंगे एंड कुछ समझ पा रहे होंगे। देयर इज बेसिकली अ गन एंड यू हैव टू मॉडिफाई अ गन विद द स्किन। ओके, सो वो स्किन कुछ भी रह सकती है। तो वो ना एक फ्रेंड से लड़के ने उधार लिए थे 1200 रुपीज, विच इज आई डोंट थिंक इट्स कंपेरेबली अ बिग अमाउंट इन टर्म्स ऑफ लाइफ। 12 लोगों ने, 12 में से एक ही जन से उन्होंने, एक पर्सन से उन्होंने 1200 रुपीज लिए थे। मध्य प्रदेश की ही बात यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में वो लोग जो रोज ग्राउंड के ऊपर में जाते थे, पबजी खेलते थे, हो जाता था काम। बट एक, जैसे मैं बता रहा हूँ कि कोई अर्निंग स्टेज में रहता नहीं है, कोई भी किसी से मदर फादर से पैसा ले लिया या फिर चुप्पी से कहीं से पैसे ले लिया, फिर यहाँ से लेने के बाद में कुछ कर दिया, फिर उसने एक फ्रेंड से यहाँ पर से पैसे लिया, देन हुआ क्या, स्किन ले ली। बट एक चीज आपने यहाँ पर माइंड करना, ये गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें आप स्पेंड करते हो, रिटर्न में कुछ मिलता नहीं है। सो अब क्वेश्चन आता है कि 1200 रुपीज लेने के बाद में लड़के ने क्या किया? डेफिनेटली ही वोंट बी एबल टू पे बैक। 12 लोगों ने एक साथ उस पर्सन को एक जगह लॉक किया एंड लॉक करने के बाद में ही लेट हिम टू डाई। टीनेजर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि कोई बड़ा है पर्सन, ऐसा है, स्कूल के लड़के हैं बेचारे। एंड यही चीज के वजह से थोड़े से एक्सपोज हुए। एंड आप देख सकते हैं, यस देयर आर मेनी थिंग्स। आई माई सेल्फ इज अ साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर, और मुझे पता है कि यही सेम गेम्स खेलकर मेरे स्टूडेंट्स ने कैसे करियर बनाया। दे डोंट हैव डिग्री बट दे आर अर्निंग मोर देन एन इंजीनियर टुडे। इंजीनियरिंग की डिग्री ना होते हुए भी इंजीनियर से ज्यादा कमा रहे। तो यस, देयर आर मेनी थिंग्स, बट वो चीज आपको पता नहीं है और कोई बताने वाला भी नहीं है। क्यों? गलत चीज पहले पता चलती है, अच्छी चीजों को पता करने के लिए अच्छे लोग भी कम मिलते हैं। सो आई विल ट्राई टू, अब मैं हमारे राहुल भैया से थोड़ा बोलूंगा कि भैया प्लीज आप थोड़ा सा इसके ऊपर में एड ऑन कीजिए। Thank you, Akshay. Thank you so much. So, hey, Clara, hope you are all doing great. Pleasure to be here. So, see, Akshay, what Akshay told you is that so don't be scared. First of all, Yeah. it's not that online games, social media, all these things are bad things, but everything has pros and cons. So, Yeah. what he's trying to basically tell you is that if you want to use something to use it, it's not a problem, but you should be very careful about the pros and cons. I would not say I would not say that you're properly children. Definitely, you are going into an adult phase. So if you play games, go for it. But just take care of that mind that you play games which are age appropriate. Now, when I was in 9, 10, or when I was in 6th also, I used to play Vice City. We all feel, when we enter into adolescence and puberty that hum to bahan hai, no one out there is more intelligent or more smarter than us. But that's not the scenario. I'll be very true to you because I have been in that phase. So when you play age appropriate games, the only motive is that, see, when you are in class 6th or 10th, there is a mental level that you have in your mind. There are only particular social construct or social norms which you have in mind. When you play games which have these things of violence, drugs, clubs, maybe nude images, all these things, so they try to interfere with your mental ability. And then you get confused that which is the reality. Is game the reality or your life is the reality? And that confusion can definitely divert you to a lot of places. So that's why it's very important that you play age appropriate games because further they'll try to interfere with the psychological mind. They'll try to make you angry, they'll try to make you anxious, they'll try to make you stressed out.
as Gaurish said, that will not go for outdoor games. I was under 16 for a district, a state football player, so I know how much that is important. Your online gaming and PUBG certificates are not going to help you throughout your life, but your outdoor game certifications, your health is definitely going to help you. So you use your internet, but just be very careful what. That's what I wanted to add, Akshay. Thank you, Super. Rahul, for answering this question. Now, just tell us about what are the dangers of playing age inappropriate games, like they use socializing apps with incorrect age, like they use FB and Instagram also, but they put in fake data for that. Correct, correct. So I'll start that, and Akshay, then you can add to that. Okay. Okay. That's a beautiful question. That's a beautiful question because मैं भी फेज में रहा हूँ and बहुत हम सब लोग बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो जैसे आप लोगों ने गेम्स, you might have heard about, just Free Fire or GTA or PUBG and all these games. So all these games are just about taking a gun and killing people. So I'm not saying don't play the game. I'm not saying, and आप लोग मेरी बात मानने भी नहीं वाले हो. Teachers की नहीं मानते, मेरी क्यों मानोगे? I'm not here to avoid that. I'm just trying here to warn people that आप लोग खेलो, but just उतना ही खेलो जितना वो आपके माइंड के साथ इंटरफेयर ना करे. It should not be that you गेम खेल रहे हो, mom is bringing you breakfast or something, बोलो मम्मी मैं यहाँ से चले जाओ, मैं बाद में खाऊंगा. This happens, and after meanwhile you feel bad about it कि मैंने ऐसा किया क्या? Why did I do this to my mom? So you didn't do it intentionally, but this is how it affected your mind, and this is a very small impact. But as soon as you start playing it exponentially, the impact is going to be exponential. It is going to interfere with your stage confidence because interaction तो आप कर ही नहीं रहे हो. You're just playing games, तो interaction नहीं कर पाओगे. Your stage confidence will be very low. Academics में issue आएगा, health में issue आएगा. You'll be psychologically low. You might go into depression, stress, anxiety. Not scaring you out, but this is the real impact it might create. So you want to play games, play, but have a proper discipline for that. It's very important. So this is what I wanted to say about online gaming. Second, I want to add about socializing apps. So many of us do have accounts, Facebook accounts, Instagram accounts, and with every good technology comes pros and cons. You're quite aware about that. So हम में से बहुत लोग तो ये सोचते हैं let's make public account. बनाओ, मैं नहीं रोक सकता. But my question is, why do you want to make public account? To get popular? Public have account is not followers. to have followers. See, followers is not a right measure of your popularity. Not at all. Trust me, not at all. The more followers you will have, the more unknown people you will have in an account, the more data and information you are going to give to unknown people, the more they can try to bully you, they can try to abuse and all those things. So you need to have a very clear vision that why do you want to have open account? See, I have an open account, but I had a proper reason that if someone out there wants to approach me for any kind of problem, they can. That is my reason, right? You might want to monetize your account, but this is not the correct age. Why? Because the problems which might come in your way are way higher than the advantages you might have. So you are not psychologically trained for that stuff. That's why just take your time, grow a bit, get yourself mentally prepared, for the criticism that you might also get, and then go for public account. Because when you are going into these things, you might be a victim of cyber stalking, cyber bullying. People might create fake accounts. अभी आप लोग देखो जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस होते हैं, all these people, उनके कितने fake accounts बने हुए हैं. You might have seen that. And when you grow, you'll see that उनमें से कुछ fake accounts ऐसे होते हैं जिनका they're kind of misusing them. Correct. So what do you think? What those people, those influencers out there, वो effect नहीं होते होंगे? Definitely, थोड़ा impact पड़ता होगा, but वो इतना ज़्यादा नहीं है because they're psychologically very strong. They're ready for that. They knew कि जब मैं ये चीज करूंगा या करूंगी ऐसा कुछ होने वाला है, so I am prepared for that. So basically, what I was saying is that you can use Facebook, Instagram, that's totally fine, but just be careful. Just be careful. That's my only motive, because it has its own pros and cons. You're very smart people, but it's just that with every public account, there are certain things we need to take care of. So that's what I just want to summarize. Especially Gaurish, Snail, I think you're one of the best students I can have. That's why you're here. Just pass on this information to your friends as well.
Sure, we would. Yeah, that's it, ma'am. I just completed that. Mehal, would you like to ask some questions? Yes, I was hoping to ask, like nowadays we have seen people, yeah, like people like us, young minds, have been creating fake IDs and entering the classroom to do pranks and disturb the teachers. So according to you, how can we stop that? How can we that treated or dealt with by law? Beautiful. Is the question So, from me or okay? yeah, Akshay, go ahead, Akshay, go ahead. It's okay. Okay. So first of all, being a cybercrime investigator, definitely we have certain norms and certain sections which comes under IT Act 2000, Section 45, Section 65, and Section 67. These are some kind of sections, and it is really important for everyone to get to know that कि हमारे पास में ऐसे rights हैं कि अगर कोई हमको ऑनलाइन डिफेम करता है, अगर कोई हमको ऑनलाइन चीजों के मतलब यही हमारी एक तरफ से वर्चुअल लाइफ है एंड यहाँ पर अगर हमको कोई ट्रबल के अंदर में हमको कोई पहुंचाता है तो डेफिनेटली वी हैव सम राइट्स एंड यस डोंट थिंक यू आर स्मार्ट बिकॉज द पीपल हु आर सिटिंग अबव यू द वे आर मच स्मार्टर देन यू क्यों जब भी एक क्योंकि बिकॉज ये चीज से हमको तो रोज डील करना पड़ता है बच्चे आते हैं they create different profiles, they do some kind of pranks. So यहाँ पर होता क्या है जब भी एक लिंक बन जाती है बिकॉज डेफिनेटली आई होप कि यू आर रियली मैच्योर्ड इनफ एंड कहीं ना कहीं टेक्निकलिटीज को आज से आपको समझना पड़ेगा बिकॉज यू आर यूजिंग डिजिटल डिवाइसेस ओके तो यहाँ पर जब भी एक लिंक क्रिएट होती है और हमारे देश के अंदर में मैं आपको बताऊं जूम गूगल मीट ये जितने भी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको हमारे गवर्नमेंट का जो आई कैन से रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से चलना पड़ता है अगर ये जिस दिन इंडिया के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं उस दिन ये देश से भी निकल जाएंगे द सेम वे टिकटॉक जैसा निकला था बात आप पूछोगे कि सर ये जो बात है ये हमारे चीजों से कैसे कनेक्ट कर पा रही है यस बहुत बड़ा कनेक्शन है अगर कोई भी लिंक आज क्रिएट हो जाती है जैसे कि मैम यहाँ पर हर एक सेशन रिकॉर्ड करते हैं जो भी चीज होती है वो रिकॉर्ड होती है डेफिनेटली तो किसी को पता चलता है किसी को पता नहीं चलता एंड जब भी कोई एक लिंक बनती है तो वहां पर लिंक के थ्रू जो भी एंटर होता है तो वहां पर ना इनके आईपी एड्रेस विच इज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस विच इज प्रोवाइडेड बाय योर आईएसपी विच इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आप अपने फुटप्रिंट्स आप अपने डिजिटल फिंगरप्रिंट्स हर जगह छोड़ते हो और हमारे जैसे लोग अगर जिनको पता चलता है कि ये सब चीजें हुई है तो डेफिनेटली हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं बट ये छोटी सी चीज के पीछे वो पूरी जिंदगी आपकी कैसे क्या बदल देंगी इन नेगेटिव वे वो चीज समझने के लिए मुझे लगता है एक पूरा सेशन बनना चाहिए बिकॉज ये चीज की वजह से आप एक हायर एजुकेशन नहीं ले पाओगे ये चीज की वजह से आप ये बात सोचो कि मेरे पेरेंट्स की रेपुटेशन के बारे में थोड़ा सा सब सोच लेना आपने कि यार ये चीज मैं कर रहा हूं अगर मैं मेरे पेरेंट्स को पता चले कि मैं मेरे टीचर्स के साथ में विच इज इन आवर रिलीजन वी से गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु भी हम क्या करते हैं हम गॉड की तरह उनको देखते हैं क्या आप भगवान से मजाक कर सकते हैं भगवान से मजाक करना इनडायरेक्टली प्रैंकिंग विद योर ओन लाइफ ठीक है तो यस कहीं ना कहीं खुद के मन पे भी हाथ लगाकर एक बार पूछ लेना कि इज इट राइट और रॉन्ग डेफिनेटली आपको जो आंसर मिलेगा वो नहीं मिलने वाला है फ्यूचर मैंने आपको बता दिया कि चलिए ये छोटी सी 5-10 मिनट की चीज अगर कहीं ना किसी कोई स्टूडेंट के भी मम्मी पापा टीचर रहे होंगे कहीं ऑनलाइन मीटिंग लेते होंगे तो वहां पर उनको ये भी चीज समझनी है कि अगर उनके साथ में कोई ऐसा किया तो आपको भी तो हर्ट होगा ये थोड़ी सी मॉरल वाली चीज जो मैंने राहुल भैया से सीखी है वो मैं बता रहा हूँ बिकॉज टेक्निकलिटी में मैं तो जा सकता हूँ बट कहीं ना कहीं ये मॉरल वाली चीज ज्यादा काम आती है जो कि लाइफ लॉन्ग रहेंगी आपके साथ में तो इस चीज से बचो और यही बताऊंगा कि जो लोग आपके ऊपर बैठे हैं बहुत स्मार्ट है आपसे बट दे डोंट वांट देयर स्टूडेंट्स दे डोंट वांट देयर चिल्ड्रंस कि वो इस ट्रैप में जाए और उनके पीछे कोई लीगल चार्जेस रहे बट यस मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया के अंदर में हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास में पूरा डेटा रहता है आप आप जा रहे हैं मीटिंग में एंटर करें आपने क्या किया क्या नहीं किया आपने स्क्रीन के ऊपर में क्या शो किया कितनी देर के लिए किया आपकी लोकेशन क्या है आपका मोबाइल कौन सा है आपने सिम कार्ड कौन सा लिया है आप कब लॉग इन हुए थे आप कब लॉग आउट हो रहे हैं एवरीथिंग इज टू बी ट्रेस्ड डाउन
सो डोंट बी स्मार्ट। ये सब चीज करने के पहले सोचा करो थोड़ा बहुत। और कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता होगा कि यस, हमको बाहर जाना है, हमको घूमना है, फिरना है, हमको हायर एजुकेशन लेना है, just the same way which your seniors and the same way which your inspiration। लगता है लोगों की नहीं यार हायर एजुकेशन लेंगे, मुझे फॉरेन जाना है। तो क्या फॉरेन में जाने के लिए वो लोग ये चीज एक्सेप्ट करेंगे? डेफिनेटली नहीं। सो इन द एंड राहुल भैया भी इसके ऊपर में ऐड ऑन करेंगे डेफिनेटली, बट इन द एंड आपको मैं कुछ ऐसी चीज बताऊंगा कि आप ये सब चीज छोड़कर अपनी लाइफ के लिए कुछ एक अच्छा चीज करना शुरू कर दोगे, विच विल डेफिनेटली आप अपने लाइफ में एक्सेल भी करोगे, खुद को पॉलिश भी करोगे इस चीज के अंदर में। बिकॉज ये जो एज है ना आपकी, यू आर रियली लकी कि आप इस चीज ये एज के अंदर में आए और आपको इतनी सारी चीजें एक्सपीरियंस करने के लिए मिल रही है। एक डिजिटल रिवॉल्यूशन की तरफ आप बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, एंड मुझे लगता है इस चीज में आपदा में अवसर आपने ढूंढना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल माय वर्ड्स। राहुल भैया कुछ ऐड करना चाहेंगे तो अक्षय जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जुवेनाइल क्राइम रजिस्टर हो जाता है तो वो बच्चों को आगे हायर एजुकेशन के लिए दिक्कत हो सकती है? एग्जैक्टली अंडर द या यस मैम, अंडर IT sections which is 45 and 65 and 67, it is मतलब ये जो sections हैं इसमें उनको अप टू 2.5 years के टर्म तक का उनको सजा, मतलब जेल के अंदर में भी प्रोबेबली जाना पड़ सकता है इन टर्म्स ऑफ हायर जो भी कुछ अगर वो वहां पर कुछ कर देते हैं। यस, अगर उसमें कुछ किसी के मेंटली हार्म हो जाता है, साइबर स्टॉक हो जाती है, किसी की प्राइवेसी वहां पर कुछ प्रॉब्लम में आ जाती है, या फिर कोई डिफेमेशन हो जाता है, एज वेल एज फाइनेंशियल लॉस में भी इसमें आता है फाइनेंशियल, देयर आर सम पेनल्टीज विच इज क्वाइट लाइक लाख टू 2 लाख रुपीज तक। बट मैं बोलता हूँ यार ये चीज तक आपने जाना क्यों है? ये चीज तक आपने जाना चाहिए ही नहीं। बट यस, रिमेम्बर, ये आपका खुद का एक काम है कि दैट यू मस्ट हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन, बिकॉज कर्मा कर्मा जो है, मैं थोड़ा सा आप बोलेंगे मॉरल पे, बट यस, गिव एंड टेक वाला ही काम रहता है यहाँ पर। इफ यू गिव रिस्पेक्ट यू विल टेक रिस्पेक्ट, अदरवाइज नो वन इज गोइंग टू वैल्यू यू। आपको अगर लगता है कि कल राहुल भैया जैसे, कल मेरे जैसे आपको भी गेस्ट स्पीकर बन के आना है, तो मुझे नहीं लगता कोई टीचर आपको ऐसी चीज करने की वजह से बुलाएंगे। एंड डेफिनेटली वो चीज में रेपुटेशन नहीं है। तो ये चीज को थोड़ा सा मैटर आप थोड़ा सा माइंड के अंदर बिठाइए। एंड मैं आपको बता रहा हूँ, गलती से भी इस चीज में मत जाइए। ये तो टीचर्स है जिन्होंने आज तक भले ही किसी की कंप्लेंट नहीं की होंगी, बट जिस दिन ये कंप्लेंट करने बैठ गए उस दिन आई डोंट थिंक कि नियर अबाउट 24 to 48 आवर्स लगेंगे, और जो भी किसी ने कुछ काम किया होगा वो ट्रेस डाउन हो जाएगा, एंड लाइफ लॉन्ग उसके ऊपर में एक काला धब्बा लग जाएगा उनके नियरेस्ट साइबर सेल के अंदर में। तो प्लीज बी अवेयर एंड सोचना भी मत ये सब चीज करने के लिए, बिकॉज IT एक्ट एक नॉन अवेलेबल यहाँ पर आपको सेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर में आप बड़े बड़े लोगों को भी ला लो, कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ पर। इंडियन पेनल कोड इज डिफरेंट एंड IT सेक्शंस आर टोटली डिफरेंट, इसी के लिए इनका सेक्शन भी अलग बनाया गया है। तो प्लीज दूर रहो इन सब चीजों से। वी आर हियर टू हेल्प यू। अगर आपके साथ में कुछ होता है, अक्षय पांडे इज हियर 24/7, मैं हूं आपके साथ में, मैं आपको असिस्ट करूंगा। बट यस, डोंट डेयर टू डू दैट। बिल्कुल भी डेयर नहीं करना ये सब चीजें करने के लिए। तो यही सब चीज था। राहुल भैया कुछ ऐड ऑन करना चाहिए? डेफिनेटली। Thank you, Akshay. So this is a very important question because I'm personally close to all my teachers and I respect all of them a lot. And it really, it really pinches me when students do such a thing. Even in my college, some students are there. So I'll just basically just summarize it in 2 minutes for all of you. This particular part is really scary. Let me tell you. I'll not be very, what do you say, artificial within this scenario. So these IT sections which Akshay was mentioning, 45, 65, and 67, these are very strict actions. And the reason is because online crime is even more dangerous than the physical crimes because there are digital footprints, the videos are there, so it always stays along. The trauma and the impact stays along. So our government is very critical about such crime. So as Akshay was mentioning that everything, who creates the meeting link, who joins the meeting link, which are the IP addresses, because every time you connect to an internet, there is an IP address. So all the IP addresses, all the location are tracked, who is presenting the screen, who is typing there, who is leaving the meeting, who is ending the meeting, all these things are recorded in a log.
And whenever required, our government can definitely ask the concerned authorities like Google, Meet, Zoom, and all these people to ask the logs, and then they can check and verify the details. So trust me, guys, are not will not be safeguarded in such scenario. So it's for all the students out there, anyone out there who is attending meetings on Google Meet or Zoom, just be very careful. And in case you get stuck in such a case, there are two major things you'll have to face. First of all is financial loss. Your parents might be charged with a lot of money because you did such a crime. And second is, if the crime is more heinous, you will have to be sent to juvenile home. So juvenile homes is not your kind of homestays or good hotels, or something like that. These are places where you'll be very far away from your parents and you'll be treated as a child, but along with the tag of criminal. It's very scary to have the tag of criminal. You cannot go for Exactly. higher studies. You cannot go So to college. all those students who are watching this talk today, only think what the school and together these people want to say is be watchful of what you're doing on the internet. Exactly. And Yes. one more thing which I would like to add over here. I know, ma'am, even my parents also are they are very less in being techno savvy. बहुत सारे बच्चे होंगे कि सर आईपी एड्रेस अगर ट्रेस हो गया तो सर हम तो वीपीएन लगा लेंगे. मुझे लगता है कि कई लोगों को यहाँ पर वीपीएन काम कैसे करता है ये पता नहीं है एंड यही VPN, चीज आप VPN प्रॉक्सी, ये वर्ड्स भी मैंने भी सुने हुए हैं. एग्जैक्टली मैम. तो ये लोग ये क्या है, ये खुद को स्मार्ट समझते हैं कब तक, जब तक इनको पता नहीं होता कि अपने ऊपर भी कोई बैठा है. वीपीएन लगाने के बावजूद भी नोड आईपी को आप कैसे हटा पाओगे, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे. चलो ठीक है, आप टेक्निकलिटीज में नहीं जाते, बट यस एक और चीज बता दूं भाई, वीपीएन लगाने से कुछ नहीं होने वाला. आप सोचोगे कि यस अक्षय सर ने बता दिया तो हमारा लूपहोल वीपीएन है, तो डोंट थिंक दैट. अगर आप कोई साइट भी सर्व कर रहे हो वीपीएन से, यू आर एबल टू ट्रेस इट. कोई जरूरत नहीं है. आप, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर हम इतने साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं तो यस हम इतने साल के केसेस को भी लेकर सामने आपके बैठे हैं जिसके अंदर हमने आपको वो ट्रेस किया है. तो बेटर है उस गलत डायरेक्शन में जाने से अच्छा जो टीचर्स आपको बताते हैं, जो कि आप अपने लाइफ में एक्सेल करोगे. और डेफिनेटली यार इस चीज में मैंने आपको और एक बार मैंने रिपीट किया है कि भाई ये चीज से आपका रेपुटेशन डाउन होने वाला है. कुछ ऐसा काम करो जो अपने पेरेंट्स को, कॉलेज वाले, स्कूल वाले आपको बुलाए और आपका नहीं, आपके पेरेंट्स का वहां पर फेलिसिटेशन हो आपकी वजह से. दैट विल बी योर विक्ट्री. सो साइबर अवेयरनेस का ये जो सेशन लिया है, ये मैं नहीं समझता कि भाई मैं पूरी की पूरी बात इस पे ही करूं कि भाई साइबर अवेयरनेस नहीं. मैंने कहा है कि यू आर दैट प्ले, कि अगर हम आपको उस सांचे में डालेंगे तो आप अपने लाइफ के एंड तक ये सेशन को याद रख सको कि यस ये सेशन था, मैंने उस समय ये चीज गलत चीज की थी, बट ये जो 2 से 3 लोग और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स आए थे, इन लोगों ने सेशन लिया, इसकी वजह से प्रोबेबली लाइफ चेंज हुई. और आप कहीं पर टेड टॉक में खड़े रह के यही सब बता रहे होंगे. ओके, सो Thank you, Akshay. ठीक है. You have well Yeah. answered this question. Now, I would like to ask one more question regarding what is the need to be aware of our cyber rights? Like how can we know more about our cyber rights, especially our children? They should be aware about cyber rights. What are they, and how can we use those rights? Correct. Akshay, let me take that. You Sure, want to add on sure. a part karna? Okay. So that's again very important. See, cyber rights, definitely we can discuss what are cyber rights, but I'll tell you why cyber rights are important. So I'll not put you in a very false hope that if you will be aware of cyber rights, तो आपको एक ही दिन में justice मिल जाएगा, 2 दिन में मिल जाएगा. ऐसा नहीं होता. It's not that easy, considering the population and the cases of a country. But when you know about cyber rights, now you are more calm about situation. You're more confident that how to react in a particular situation. Considering sometimes someone is trying to bully you. So in case you know your rights, you know how to react, so you'll be more calm. You'll not be responding. You'll not be responding to people who are trying to bully you. You'll simply take a screenshot very calmly. You'll not respond. You'll simply report it. That's it. If someone is trying to use a fake account, you will not loop in your friends and try to delete the account. अगर आपने account delete ही करवा दिया तो कोई trace कैसे करेगा? You'll just be patient. Just take the link, report it to the cyber cell, because account होगा तभी देख पाएंगे. But what most of us do is कि जैसे someone tries to bully us or do these kind of things, we try to erase the digital footprint. तो वो सब नहीं करना. So I'll tell you the rights, but the whole gist of telling you rights is that you're more confident, you're more calm,
You will know how to react in a particular situation. You will know how to help your friends and how to help yourself. So that is the major thing. And regarding rights, so no one can try to tell your ill comments about you on internet. No one can bully you. No one can send you any kind of explicit pictures, sexual content, or anything like that. Every law is made for that. So the immediate reaction should be, you should have certain proofs. Take a screenshot, take a video recording. If you have a contact number, keep that safe and report it as soon as possible. So that is a simple need and awareness to have cyber. Okay, Rahulji, I wanted to ask one more thing. Now that the schools are into online and a hybrid mode system, there is more need to aware parents as well at the same time, the students also. But is the government doing enough to educate? Like they have policies, national education policies, and do they have anything in relation to cyber security or IT or any other guidelines related to IT, especially for the schools? Correct, correct. So I'll answer half of this question, half of I'll leave it to Akshay because he's more working with the government on IT sector. So first thing I want to tell you that government is trying the need it to the thing it have to do. The only problem is, ma'am, I would say the population is too much and the lack of manpower working in this field is too less. So this bandwidth is trying to create a problem and trying to create the justice in cases of online crime. But this doesn't mean that they cannot be caught. The culprits will definitely be caught, but it is just that it is taking more time. So second thing is, as Akshay also told you, that government is in touch with different nodal agencies. When I mean Google Meet, Zoom, and all these gaming agencies for logs and information if any kind of case is being reported. And they are also even expanding that thing. Third, government is trying to create more awareness and more kind of jobs in the field of cyber safety and forensics, that more youth can come and they can try to resolve this. So definitely one thing is missing is that is the government based projects to collaborate with different schools on a larger scale and on a smaller scale to do such awareness workshops is kind of missing something because they don't have that much experts, if I have to be very precise. So in this situation, what we can do is we can just try to aware ourselves on a personal level as we are having this conversation, right? So I'm hoping this webinar will be shown to a lot of children. And if each of them can take a few pointers from this, it's kind of a good thing to start with. So, but yes, there are a lot of pros and cons, I would say. But I have experienced one particular thing in personally. Any kind of crime happening in this country might be delayed. But when it comes to children, the government is very serious about this. I've seen in this in cases of child sexual abuse as well, even if online crimes as well. When it comes to a child, they're very, very critical about this. Even if a child is a culprit or a child is a victim. So that thing I'm quite sure about. Akshay, you want to add something? You want to discuss any case? Sure. Really, you have explained really greatly, Via, about government is really doing enough. But actually, I think कि ये जो चीज है यहाँ पर लिमिटेशन इज मैन पावर बिकॉज यू नो आई एम ऑल्सो मैम ने यहाँ पर मेंशन किया था आई एम ऑल्सो फाइनेंशियल लिटरेसी लिटरेट करता हूँ मैं लोगों को पीपल नाउ डेज आर रनिंग इन रैट रेस भाई 10th किया 12th किया 12th में साइंस लिया इंजीनियर बने वी आर गोइंग इनटू डेवलपर जॉब दैट्स इट 9 to 5 जॉब मिल गया ओपन खत्म बट if they want something adventurous, if they want to expose themselves to a new world, cyber security is for you guys. साइबर सिक्योरिटी के अंदर में सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई आपको 9 to 5 जॉब नहीं, इट इज फॉर एंटरप्रेन्योर्स. अगर आप सोचते हो कि आपकी स्किल्स है जो आपको लोगों को बतानी है तो डेफिनेटली आपको साइबर सिक्योरिटी में आना चाहिए. बट यहाँ पर वही चीज होती है. आई एम प्रेजेंटिंग अ फैक्ट इन फ्रंट ऑफ यू. विद इन लेस देन अ ईयर, एक साल भी होने का है, बट हमारे पास में पूरे ऑल ओवर 2.5 लाख केसेस रजिस्टर हुए हैं. 2.5 लाख साइबर क्राइम केसेस रजिस्टर हुए हैं. मैं एक बार वापस करेक्ट करना चाहूंगा खुद को, ये सिर्फ रजिस्टर हुए हैं और 90% केसेस रजिस्टर नहीं होते. दैट मींस 22.5 लाख ऐसे केसेस हैं जो सिर्फ डर की वजह से लोगों ने, डिफेमेशन होने की वजह से लोगों ने नहीं फाइल किए. इसका फायदा कौन उठाता है आपको पता है? वही स्कैमर, वही लोग जिन लोगों ने आपके साथ में ये सब अटैक्स किए थे. आज आपने उनको छोड़ दिया, बट कल जाकर आपके ही भाई बहन, आपके ही दोस्तों को वो लोग टारगेट करेंगे. क्यों? आपके चुप बैठने की वजह से.
पूरा सेशन लेने का मोटिव यही है कि हमारे जैसे लोग आज भी आपके सामने हैं जो आपको असिस्ट करने के लिए 24/7 रेडी है। और ये क्वेश्चन का आंसर यही है कि अगर गवर्नमेंट सच में कुछ काम कर रही है टू एजुकेट पीपल अबाउट साइबर क्राइम, तो यस, उन्होंने मुझे भेजा है आप लोगों के सामने कि आप लोगों को की कुछ भी मदद रही तो प्लीज बचपन की टीम के वो जो को फाउंडर है हमारा राहुल भैया, या फिर मुझे जैसे भी कांटेक्ट कर पाए कीजिए। हम आपको प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर में आपको हेल्प करेंगे एंड डेफिनेटली इट विल बी योर प्लेजर एंड फॉर्च्यून, बिकॉज मैं आपको बताना चाहूंगा द मोस्ट एक्यूरेट वे टू एंड दिस, एंड तो नहीं होगा डेफिनेटली, टू अवॉइड दिस is to be a to aware people about cyber crime awareness। तो ये हमारा टोटल मोटिव है, बिकॉज कहीं ना कहीं एक चीज मुझे पता है, भले ही ये मेरे पार्ट का इन्वेस्टिगेशन नहीं है, मैं महाराष्ट्र के अंदर का इन्वेस्टिगेशन क्राइम्स लेता हूँ, बट यस, मेरे ही जैसे लड़के जो इन्वेस्टिगेट करते होंगे, जो असिस्ट करते होंगे, उन लोगों के ऊपर प्रेशर कम आएगा, बिकॉज एक केस को सॉल्व करने के लिए हमको हफ्तों लगते हैं और यहाँ पर हमारे पास में थाउजेंड ऑफ केसेस दिन में आते हैं। तो किसका केस कैसा रहता है, मैं यहाँ पर, टाइम लिमिटेड है, मैं बता भी नहीं पाऊंगा इतना, बट यस, रिमेंबर, हर चीज ट्रेस डाउन होती है। खुद को बचाओ, दूसरों को ट्रबल में मत डालो, खुद भी मत फंसो। अवेयर करने का हमारा इतना ही यहाँ पर मोटिव है। एंड डेफिनेटली बचपन की टीम एक बहुत अच्छा वर्कशॉप भी इसके ऊपर में लाने वाली है, जिसमें अगर आपको लगता है तो आपने इसमें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिसमें पूरा 3 से 4 दिन जो भी रहेंगे, 4 से 5 दिन जो भी रहेंगे, इसमें आपको बहुत सारी चीज सीखने के लिए मिलेगी। तो जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, आई होप कि मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल भी आप शायद स्टूडेंट को प्रोवाइड कर दे, जो भी उनके करियर रिलेटेड या फिर कुछ भी आउटर करिकुलर उनकी अगर कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे, वो टीम बचपन या फिर मुझसे यहाँ पर कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। दैट्स इट राहुल भैया, थैंक यू। Gorish, would you like to ask some question, sir? Yes, ma'am. Like in this, ma'am, when we use social media, etc., everyone knows like they are using addictive algorithms to keep people scrolling over. Like, aren't there any laws to prevent them from doing that? How are they getting away with it? ओके, Correct. राहुल भैया यू कैन स्टार्ट। Yeah, आप बोल yeah. सकते हैं इसमें। Thank you, Akshay. Thank you. So, see, Gaurish, there is only one thing, everyone, most of the people, organizations, if I talk about companies, so they are all commercial companies, they're all commercial businesses, correct? So when I talk about Instagram, Facebook, the major problem with these platforms is that, in case by mistake, a friend of yours sends you an adult kind of content and you by mistake opened it. So now, as you correctly said, it has that algorithm that next time when you start scrolling it, it will show you that kind of content only. Correct? And as of now, see, this is an algorithm by the parent company. If I talk about Facebook or Instagram, this is the algorithm by the Meta company, by Meta, because they have been renamed in that way. So they have this algorithm to take care of that. If someone is scrolling for a mental health content, then they'll get the content. If someone is scrolling about a dance content, they'll get the content. But they didn't have that vision in mind that can people misuse this in that way as well. So as of now, I haven't heard from any of the founders of Facebook or Instagram that they're trying to dissect the algorithm to prevent children or people from getting addicted to this technology. But I think this is their mission, because the more you get addicted to the technology, the more they'll be earning the money, because you are more spending time more on their apps and everything. So I think this is more kind of a personal prevention which we all need to take care of, that what is our motive of using Facebook, what is our motive of using Instagram. Because if you ask me personally, it should not be used for much of entertainment, because for that you have OTT platforms, you have YouTube, you have different things. This should be more kind of a connecting platform with a friend. So we need to redefine our motive of using such platforms. That what are we using it for? Yeah, that's it, Coach. Okay, so I One, have a question here. Now, this is could be a little general as compared to student specific and all. We as users, I don't know about everyone, but I on a general if I level, if I say we are very stingy in terms of investing something to keep ourselves safe, from cyber attacks. Here I mean the antivirus. We normally on a general thing only download the ones which are free. But don't you think we should also take out some money to keep ourselves safe and invest in some good, uh, you know, antivirus where it is a paid one which safeguard you from
phishing attacks and all those. What is your comment on that? So, yeah, Akshay, you want to go Yeah, ahead? sure. First of all, ma'am, it's actually we are cybersecurity researchers as well as my students are also VAPT, which is vulnerable access penetration testers. That means what we do, we report multinational companies that to maintain their security, that to patch their bugs, to not to not to any kind of an attacker can attack any user or a victim. So in this case, आपको अभी के एरा में जो भी फिशिंग लिंक्स बनती है, तो आप फिशिंग लिंक्स आर बेसिकली मुझे पता नहीं कितने लोगों को पता है, they are just a fake pages which totally pretends like an original one. You will type the credentials over there, like it can be of Facebook, it can be of Netflix, can be of Instagram and Amazon, and वो credentials अटैकर के पास में चले जाते हैं. Prevention is really simple, like you have to keep a two-factor authentication on. ओटीपी जो होता है आपका वो आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिसे बोला जाता है वो आपको ऑन रखना है, जिससे अगर आईडी पासवर्ड भी किसी को मिल जाता है तो ही विल बी नॉट बी एबल टू एक्सेस इट विद जस्ट आईडी पासवर्ड्स. यहाँ मैं थोड़ा So- सा इंटरप्ट करना चाहूंगी अक्षय जी. ये एक चीज हम क्योंकि एक जीसी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं हमारे स्कूल को ऑनलाइन मोड पे चलाने के लिए, तो ये चीज मैं चाहूंगी कि इसकी इम्पोर्टेंस पेरेंट्स को भी पता रहे. और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन स्कूल भी बहुत इनकरेज करता है, बच्चे भी और पेरेंट्स दोनों ही इसे ऑन रखें. तो आप थोड़ा सा और इसके ऊपर थोड़ा सा एलैबोरेट करें, इसकी जरूरत क्या है? एग्जैक्टली फॉर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैम. करेक्ट अक्षय. यस. ओके या देखिए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको कहा, फिशिंग इज रियली इजी. समवन विल सेंड यू अ लिंक, एंड सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसा अटैक है जो कि दुनिया के अंदर में कभी फेल नहीं होता. लाइक दे विल प्ले विथ योर माइंड, जस्ट लाइक आप यहाँ पर कोई स्टूडेंट है, पबजी खेलते हैं, यू विल गेट फ्री यूसीज. कोई पेरेंट है, उनको बोला जाएगा कि आपके बच्चे का रिजल्ट लग गया है, तो रिजल्ट को अगर आपको लॉगिन करना है तो आप अपने मतलब वो कोई भी मैनिपुलेशन आपको कर सकते हैं, फिर आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल देते हैं. यूजर आईडी पासवर्ड जाना, एंड यस इन द वर्चुअल एरा डेटा ब्रीचेस इज हैपनिंग. कोई भी किसी का भी यूजर आईडी पासवर्ड कहीं से भी मिल जाता है इजीली, कहीं पे भी कोई भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स का भी मिल जा रहा है. बट द ओनली थिंग विच इज कीपिंग यू सेफ, दैट इज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन. ठीक है, कैसे होता है? जब भी आप लॉगिन करते हो, एक वन टाइम पासवर्ड आता है जो कि एक कुछ मिनट के लिए आपके पास में रहता है. अगर वो एक वन टाइम पासवर्ड जो आपको अपने मोबाइल नंबर पे आपकी ईमेल के ऊपर में जब भी आता है, वो आप वहां पर डालकर वेरीफाई कर लेते हो, एंड जब वो वेरीफाई होगा तो ही लॉगिन होगा. Even if you provide me those ID passwords, I am not gonna able to log in with those ID passwords. तो yes, जितना ज्यादा कन्वीनियंट ये चीज है उतनी ज्यादा प्रिकॉशन. बोलते हैं ना, पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो यही चीज है, यू आर हैविंग पावर्स, तो यस इट्स आल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप योरसेल्फ सेफ. मैं नहीं समझता आज का सेशन हाँ, आज का सेशन सिर्फ मेरे तक यहाँ तक ही लिमिट है कि भाई मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, नहीं, ये आपके लिए है, ये हर एक पर्सन के लिए जो इसे सुन रहा है, और हर एक उस पर्सन के लिए है जो कि डिजिटल डिवाइस से कनेक्टेड है. Yeah, I'll add on to that. Ma'am. So you can definitely use antiviruses. Okay. So the only thing is when we go for free software, you should know that the world out there is not so generous that they will provide you anything for free. So if you are going for free software, so definitely they're going to take a lot of your data. And in that case, sometimes spywares might also come to your laptop. But I personally believe nothing good happens for free. So it's always a good strategy to use premium accounts. It can be regarding premium Gmeet accounts, or premium Zoom accounts, or premium antiviruses, because if you are paying them, definitely they're going to provide you more security. So you can go for antiviruses, because the major use of antiviruses is to block the websites which are not secure. Because we on a general basis do not have so much time to check which is HTTP or which is HTTPS. So that work is being done by the antiviruses, or you kind of insert a pen drive, and that pen drive has a spyware or maybe a phishing link or something. So antiviruses will try to protect that thing. It will try to protect that. Don't worry, I am here as an antivirus, and I'll not let in software come into your computer or something. So if you ask me personally, definitely you should pay for such things. It's always a good investment to secure yourself in cyber. Yeah.
एंड वन मोर थिंग, लाइक आई डोंट थिंक जो लोग हैं वो मैक्सिमम लैपटॉप या डेस्कटॉप के एक्सपोज में रहते हैं, बट मोबाइल के एक्सपोज में वो दिन भर रहते हैं, ठीक है? तो there are many good applications which are freely available on Play Store. Avast antivirus है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे हैं, रशिया का है, ओपन सोर्स है मैम। जस्ट लाइक एक एनजीओ होता है वैसे ही उनका एक है। तो वो फ्री में आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट फिर भी लोग हैं कुछ थोड़ा सा निग्लेक्ट कर देते हैं चीजों को। वो पैसा लगा देते हैं हमारे लैपटॉप डिवाइसेस के ऊपर ना, बट वो मोबाइल को सिक्योर करना नहीं चाहते। एंड यस, वन मोर थिंग, our mobile runs on a Linux operating system, and Linux operating system is the safest operating system, जिसके अंदर में आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई भी अटैक हो जाएगा। हाँ, आप ब्राउजर के थ्रू जो भी लिंक्स के थ्रू अटैक होता है दैट इज टोटली डिफरेंट। बट अगर कहीं बात की जाए कि आपके मोबाइल में स्पाईवेयर डालना है, आपकी इसमें ये डालना है, जो भी कुछ इनपुट्स करते हैं मैलिशियस कोड्स वगैरह, उसके लिए अच्छी सिक्योरिटी दी जाती है आपके मोबाइल में। बट यस, वन मोर थिंग, if you are using Chinese brands just like Redmi, Oppo, OnePlus, and all these kind of stuff, this is really general. They are already having pre-added adware. If you don't believe me, just Google it, or you can take the box of that your mobile. It is written on the back that is pre-added adware. You won't be able to remove it, right? So we all are suffering from these things. ऐसा नहीं है कि भाई आपके साथ में मेरे साथ में हुआ। आई प्रीफर टू सैमसंग। तो ये थोड़ी बहुत चीजें भी आपने ध्यान में रखनी चाहिए, थोड़ी बहुत जनरल एजुकेशन के लिए बस। I think you have already provided us so much of information about being safe on internet. I think Gorish has to ask something. Yes, Gorish, go ahead. It's not really the question, but I'm gonna ask it. Like we are playing like BGMI Free Fire. It has a bad motive like killing people and getting points, etc. But like gaming overall, can it be like productive? Like it can make improve Correct. relationships, like family Yes, games. correct. Very Actually, good Yeah, question. that's I probably think the theme of this year. So if you could just throw some light, both Akshay and Rahul ji. राहुल भी आप ऐड करना चाहेंगे कुछ, या yeah, फिर? yes. Let me या go ahead श्योर। with this one. See, Gosh, I have a lot of friends who do the online gaming professionally, and they do earn a lot of good living from that. So I'm not saying that you should not. If someone is very good at gaming, go for it. Go for it as a professional career. There's not a problem in that. As of now, I can see that there are even certifications. There are even colleges out there in foreign countries who are providing degrees for gaming. So that is a good thing. But you should know that, are you doing this for fun, or are you doing this for a career orientation? Correct. And trust me, when people who are going for career orientation, who are doing online gaming, everything, very few people out of there do make it to the end, because a lot of them are addicted to it. So when you think of making gaming your career, you should be very career oriented towards it. It should not be that you're just playing game for the moment. You should have to build those profiles in such a way that you'll be able to build a career out of it. So you need Okay. to take care of those things, but be very careful that what you are planning out if you're playing online. I want to add one thing. Like as I said, I am a crypto enthusiast also, and we believe that कि यहाँ पर जो भी लोग हैं, and ये definitely हम जो भी workshop लेते हैं entrepreneurship build up करने के लिए लेते हैं। There are 3 to 4 websites which I personally use. मैं आपको इसके बारे में अगर बताना चाहता हूँ, मैं स्पेशली आपको बता दूंगा कि कैसे होता है। They don't require any kind of a degree. They don't require any kind of a certification. You just have to, like, if you are providing them to just test their games, they are providing hourly payments like 1,000 to 2,000 rupees per hour टेस्ट करने के। आप अपने रिज्यूमे के अंदर में भी ऐड कर सकते हैं आगे कि भाई आई हैव connected with these organizations, and in the metaverse, I don't know you know these terms or not, metaverse and ये play to earn वाला जो कैटेगरी होता है, यहाँ पर आपको गेम खेलने के पैसे मिलते हैं। एंड बाय these stuff, मैंने मेरे पेरेंट्स को यहाँ पर कुछ गिफ्ट दिया। लाइफ की पहली मेरी अर्निंग वहीं से थी, क्योंकि मैं भी यही चीजों से गुजरा हूँ, एंड मैंने कुछ उसको प्रोडक्टिव बनाना चाहा। तो यस, इसके लिए बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन के ऊपर में। अगर आप इसको एज अ करियर बनाना चाहते हैं, व्हाई नॉट टू अर्न फ्रॉम टुडे बाय जस्ट टेस्टिंग rather than wasting our money in these BGMI। भाई वो चाइनीज कंपनीज आपसे रोज पैसा ले रही है। थोड़ा
थोड़ा पैट्रियोटिक हो जाओ, थोड़ा देश के बारे में सोचो, बाहर की कंपनी से थोड़ा सा अपने लिए पैसा इंडिया में लाओ, इकोनॉमी बढ़ाओ, जीडीपी में अपना हाथ दो, सामने जाके इतने अच्छे एजुकेटर्स, इतने अच्छे भैया, इतने अच्छे सिस्टर्स आपके सामने हैं, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर देम। एंड अगर यहाँ पर बात की जाए व्हाट आर द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द टर्म ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर अवेयरनेस, टू इन्वेस्ट इन योर नॉलेज, टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। इससे बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती लाइफ में भी एंड इसमें भी। थैंक यू। Right. Okay, I think that was a very powerful session today, what we had. And I'm sure all those who attended the webinar today and all those children who would be watching this later will definitely have a lot of insights towards the theme for today and the talk. Firstly, cybersecurity, the need of it, why we have to keep ourselves safe, how not to indulge into all these things, what are the repercussions, and what all is there, as Sir summed up in the end. What are the bright futures that you all can look up if you want to make career in gaming, or maybe being a influencer and all those things related to that. So my thanks to Rahul ji from Bachpan and Akshay ji. Thank you so much on behalf of the Little Flower Convent School Panchkula for the time given to us and our students, and informing our students and our parents and also the teachers, because information वो कहीं से भी मिले, मुझे लगता है बटोर लेनी चाहिए. Thank you so much once again, Akshay ji. बहुत अच्छे से आपने आज समझाया, आपने जो समय दिया. Thank you, Rahul ji, once again. I thank sisters also who took part in it, and Bini ma'am as well for organizing this seminar. Thank you so much for being a part of it. And we will definitely look forward for more sessions, more informative sessions with you in future.